हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। आज ये वीडियो रे कनसेप्चुअल क्लारिटी आनिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित कनेक्टेड जहाँ भी क्वेश्चन आछे हमें केमती कॉन्फिडेंटली करेक्टली करि परिबा सेथि पई आज रो वीडियो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ओरिजिन हला फाउंडेड हला 28 डिसेंबर 1885 रे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाज वन ऑफ द फाउंडर of Indian National Congress. Other founding members include Dadabhai Naoroji and Dinsho Wacha. Governor General Viceroy during this time was Lord Dufferin and Prime Minister was Gladstone. Indian National Congress ଆସିଲା आज ସେପ୍ଟି ଭଲ୍ଭ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ତାର ରିଜନ ହେଉଛି 1857 ର ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ତାକୁ ନର୍ମାଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ को हैंडल କରିବା ପାଇଁ इंडियन नेशनल कांग्रेस आसीथिला तेणु आपको सेफ्टी वॉल्व बोली कहा जाए। मोर देन जस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वाज एन असेंबली कांग्रेस वाज an assembly for politically minded individuals who were interested in reforms. Initially, the Congress was formed with the intention of discussing problems faced by the people of country irrespective of caste, creed, religion or language. It was basically a movement of the upper and middle class western educated Indians in its moderate phase. 1883, Hume had outlined his idea for a body representing Indian interest in an open letter to graduate of University of Calcutta. It aimed to obtain greater share in government for educated Indians and to create platform for civic and political dialogues between them and the British Raj. तो एक्चुअली जीवा में जो जिनस हमर दरकार अछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट। ह्यूम ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट मीटिंग इन बॉम्बे विद द अप्रूवल ऑफ वाइसराय लॉर्ड Dufferin. Umesh Chandra Banerjee was the first president of Congress. The first session was attended by 72 delegates. सब क्वेश्चन आसे फ्रेंड्स representing each province of India. In 1890, Kadambini Ganguly, the first woman graduate of Calcutta University, addressed the Congress session, which symbolized the commitment of freedom struggle to give the women of India their due status in national life. The Kadambini Ganguly 1890 कलकत्ता यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से फ्रीडम स्ट्रगल रे वुमेन मानकर कोन रहिबो रोल ता विषय कहितले। सो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स जदि देखिबा द मेन एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in the initial stage were find a democratic nationalist movement, politicize and politically educate people, establish the headquarters for a movement, promote friendly relation among nationalist political workers from different parts of the country, develop and propagate an anti-colonial nationalist ideology गोटे आसिला and formulate present popular demand before the government, develop and consolidate a feeling of national unity among people जहाँ जोगु 1857 विद्रोह सक्सेसफुल हेई पारि नथिला से सब जिंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस आनी थिला एकजुट करैथिला एवं ता सहित लोक माने एकाठी हेले एंड गोटे नेशनलिटी रो फीलिंग्स जनरेट हला। केयरफुली प्रमोट and nurture Indian nationhood. तो जो देखिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस को ए मैप रे बहुत चिन्ह हम देखि परिबा को जगह रे आईएनसी रो को सेशन हेतिला 1885 रो 1947 पर्यंत तारो डिटेल्स अछि। कलकत्ता रे लंबा लिस्ट अछि, बॉम्बे रे लंबा लिस्ट एंड मद्रास रे बहुत अधिक आइछि। तो यारो डिटेल्स एटा हम मैप माध्यम रे देखुछे। यस फ्रेंड्स, को जगारे को वर्ष हेतिला एवं प्रेसिडेंट किए थिले 1885 रो 1946 पर्यंत। इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम उमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे 1885, दादाभाई नौरोजी 1886 कलकत्ता, बद्रुद्दीन त्याबजी मद्रास 1887, ये सब जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888, सेमती विलियम वेडरबर्न बॉम्बे 1889। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बट या परे आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस को भी मु नै कि जाउछि। Okay, anyway, 1885 is very important. 72 people को join करथिले, attend करथिले and decided प्रथमे पुणे रे हबार थिला but was shifted to Gokul Das Tejpal College Bombay because of cholera disease spread हेतिला। cholera disease रो spread जोगु को दृष्टि रे रखि पुणे रो बॉम्बे को शिफ्ट करा जायतिला प्रथम अधिवेशन टा। some other important sessions जदि देखिबा ताले कलकत्ता अधिवेशन फर्स्ट टाइम वंदे मातरम was sung, रहीमुतुल्ला सयानी थिले,
सेमती 1911 कलकाता फर्स्ट टाइम जनगण मन वाज संग बिशन नारायण धर थिले सेमिति गुवाहाटी नेसेसरी टू वेयर खदे क्लॉथ्स फॉर एवरीवन ये कंपलसरी कराइतला 1926 श्री नवास अयंगर थिले ताकू छाड़ी कि सहित डिस्कस कर दिए सो दैट या ठू भल किसी नथिबो इजीली आमे ए जिनसटा को बुझी जिबा तो आमे वर्तमान देखुचे इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्विक रिवीजन करिबा मॉड्यूल को इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरियस सेशन प्रेसिडेंट्स एंड इंपोर्टेंट आउटकम्स जदि देखिबा ताले देखो फ्रेंड्स इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल द इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे रे प्रथम डिसेंबर 1885 रे हितिला द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नरोजी कर थिला फिरोज शाह मेहता बद्रुद्दीन त्याबजी उमेश चंद्र बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी रमेश चंद्र दत्त एस सुब्रमण्य अयर समिति among others was largely from Bombay and Calcutta. A retired British official Alan Octavian Hume played a crucial part in bringing Indians from various regions together. So ये गोटे important initiation of Indian National Congress. तापर जदि आमे देखिबा आमे मॉडरेट फेज बा 1885 रु 1904 पर्यंत जदि देखुचे ताले प्रथम अधिवेशन बॉम्बे सेशन 1885 प्रेसिडेंट थिले उमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस आउटलाइट सेकंड आसिला आमे जदि इंपोर्टेंट देखुचे कलकत्ता सेशन 1886 दादा भाई नरोजी वाज द प्रेसिडेंट टारगेट थिला मर्जर ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस कांग्रेस डिसाइडेड टू सेट ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज अक्रॉस द कंट्री ये 1886 कलकत्ता सेशन मद्रास 1987 इंपोर्टेंट सेशंस गुडा डिस्कस करा जा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपोर्टेंट तो 1987 मद्रास सेशन रे बदरुद्दीन तयाबजी सैयद बदरुद्दीन तयाबजी प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट होइतिला अपील वाज मेड टू द मुस्लिम्स टू जॉइन हैंड्स विथ अदर नेशनल लीडर्स समिति रहीमतुल्ला सैनी कलकत्ता सेशन 1896 नेशनल संघ वंदे मातरम संघ फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता सेशन 1896 से समिति इंपोर्टेंट जो देखिए रमेश चंद्र दत्त लखनऊ सेशन 1899 कांग्रेस डिमांडेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट a stop to the drain of wealth and demand for permanent fixation of land revenue होइतिला रमेश चंद्र दत्त कर प्रेसिडेंटशिप लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1899 सेमती कलकत्ता सेशन 1901 दिनसोई वाचा फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी appeared on the congress platform एटा मध्ये क्वेश्चन आसे कलकत्ता सेशन 1901 he urged the congress to support the struggle against racial discrimination and exploitation in the country पीरियड 2 को जदि आमे जाउचे नेशनल मूवमेंट 1905 रु 1918 भितरे आसिले गोपाल कृष्ण गोखले बनारस सेशन 1905 divisions between moderates led by Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee and the extremists led by Bal Gangadhar Tilak came to the fore in the session. So moderates and extremists आसीगले moderates Gopal Krishna Gokhale and Surendranath Banerjee कर leadership रे and extremist Bal Gangadhar Tilak कर leadership रे expressed resentment against the partition of Bengal and proclamation of Swadeshi movement in Bengal 1905 Calcutta session 1906 Dadabhai Naoroji again the word Swaraj mentioned for the first time resolution supporting the program of Swadeshi boycott and national education was passed so Calcutta session 1906 Dadabhai Naoroji next Rasbihari Ghosh Surat session 1907 known for split of Congress into moderates and extremists Surat session Surat split and Rasbihari Ghosh was the president. Samiti Madras session 1908 Rasbihari Ghosh again and constitution of the Congress drawn. Lahore session 1909 Madan Mohan Malviya disapproval over separate electorates modeling into reforms asila. Tapre asila Bishan Narayan Dhar Calcutta session 1911 Janagana Mana Sangh for the first time Calcutta session 1911 Samiti Ambika Charan Majumdar Lucknow session 1916 Lucknow pact signed joint session with Muslim League
reunion of the moderates and extremists ହେଇଥିଲା ये भी important role play करे exam point of view ରୁ Aniveshant first woman president of Indian National Congress Calcutta session 1917 ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା era of mass nationalism 1918 to 1927 ଭିତରେ special session 1918 Bombay Syed Hassan Imam turned the Montagu Chelmsford reform as disappointing. It demanded declaration of right for the people of India. Special session 1918 Bombay. Amritsar session 1919 Motilal Nehru was the president. Congress extended support to Khalifat movement and Jallianwala massacre strongly condemned. ठीक सेमती जो स्पेशल सेशन 1920 कलकत्ता को जिबा लाला लजपत राय was the president. Congress approved a non-cooperation program and the program included boycott of schools, foreign clothes, legislative councils, etc. Second phase could include mass civil disobedient movement. Special session 1920 Calcutta Lala Lajpat Rai. Nagpur session 1920 Vijay Rangavacharya ତାଙ୍କର important role ଏଇଟା ଥିଲା କି Congress working committee CWC of 15 members was set up to lead the Congress. Important during Nagpur session 1920. Gaya session 1922 C.R. Das and other leaders. So leaders broke away from INC, formation of Swaraj Party. Gaya session 1922 Chittaranjan Das. Welcome session 1924. Here question रहा से M.K. Gandhi was the president. Only session presided over by Mahatma Gandhi. That is Belgaum session 1924. Important Indian only or the first Indian woman to become the president of Indian National Congress. Kanpur session 1925. तापरे असला towards freedom. Purna Swaraj asila president किए अछंती M.A. Ansari. Madras session 1927. Boycott of Simon Commission. The goal of Indian people is complete national independence. Passed a resolution against the use of Indian troops in China, Iran, and Mesopotamia. So Madras session 1927. Then Calcutta session Motilal Nehru. Formation of All India Youth Congress. Similarly, Lahore session 1929. Jawaharlal Nehru. Complete independence of Purna Swaraj was declared as the claim of the Congress and civil disobedient movement launched authorized to launch the program. 1930 January 26 was fixed as the first Independence Swaraj Day to be celebrated everywhere. सेइतପାଇଁ January 26 को एबे भी गणतंत्र दिवस हिसाब रे पालन करा जाउची. 1930 रे प्रथमे Swaraj Day by Independence Day declared करा जायतिला. The round table conference was to be boycotted according to Lahore session 1929. Karachi session 1931 Vallabhbhai Patel Delhi Pact of Gandhi Irwin Pact was endorsed. Goal of Purna Swaraj was reiterated. Two resolutions were adopted. Fundamental rights and the other on the national economic program. Resolution on fundamental rights guaranteed by Vallabhbhai Patel Karachi session. ये सब important sessions थिला. तापरे बहुत important role play कला changes in the Congress constitution. Delegates were to be elected at the rate of 1 per every 500 primary members, thereby making them representative of the people. Rajendra Prasad asile Bombay session 1934 re, Jawaharlal Nehru asile Lucknow session 1936 re adopt socialism as its goal. Tapare asile Faizpur session Jawaharlal Nehru, the session held in a village for the first time. Haripura session 1938 Subhash Chandra Bose asile resolution adopted that the Congress would give moral support to those who were agitating against the governance in the princely states. National Planning Committee set up under Jawaharlal Nehru. Next is Tripura session 1939 Subhash Chandra Bose. Later Rajendra Prasad asile. Forward bloc form karithile Subhash Chandra Bose. Next is Ramgarh session 1914.
Abul Kalam Azad civil disobedience movement to be launched at appropriate time and circumstances. These are the decisions. Same the Meerut session 1946 JB Kripalini last session before independence होची JB Kripalini को presidency रे Meerut session 1946. So the sessions for the years 1930, 35 and 41 to 55 ये सब could not be held. At, at the time of the first session INC, Lord Dufresne was the viceroy. ये भी important अच्छी and एठी आमे total सबुतक सेशन तो पढ़ी देले राइट कहारी किछि या भितर डाउट नथिबो बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु कोगुडा इंपोर्टेंट सेगुडा मु कहि सारी छि ऑलरेडी फर्स्ट होउछि बॉम्बे डिसेंबर 1885 आकु छाडी देला परे जदि हम देखिबा लॉर्ड डुफ्रिन डब्ल्यूसी बनर्जी प्रथम 72 delegates दादाभाई नौरोजी इज इंपोर्टेंट सेकेंड थर्ड मद्रास सैयद बदरुद्दीन तयाबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एग्जाम रे आसे आकु छाडी देला परे जार जहा इंपोर्टेंस अछि जेमति लाइक वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग प्रथमे कलकत्ता सेशन 1896 रे करा जायतिला गान करा जायतिला ठीक सेमति बहुत गुडे इंपोर्टेंट जिंस अछि जो सूरत स्प्लिट कथा हो किंबा मुरली मिंटू रिफॉर्म जनगण मन फर्स्ट टाइम कलकत्ता सेशन 1911 ये भी क्वेश्चन आसे तो वेरियस क्वेश्चंस को एरिया रो कोन कोन आसीबार चांसेस अछि ताकू देखिबा एंड से हिसाब रे निजो को प्रिपेयर करिबा एंड हम जानि छै जेमति फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू क्वेश्चन आसले आंसर करि दबा किंतु कानपुर सेशन 1925 ये भी इंपोर्टेंट राइट ठीक सेमति हनी बेशांत कलकत्ता सेशन 1917 फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सो होप ये सब तुम को हेल्प करिवो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो वेरियस सेशंस प्रेसिडेंट एंड इंपोर्टेंट आउटकम्स क्विक रिवीजन मॉड्यूल and this video will be provided to you in our exploring goals application जो माने join करना application रे you can WhatsApp me in this number to join किंबा हमरो application रो link मध्य वीडियो रो description रे अछि join करि परिबो just 399 केवल एई pdf पाइ न there are sufficient content both pdf study materials ebooks ता सहित mock test and live classes जदि live miss करछो recorded classes so that's it in this session thank you for watching like share करिवा को भूलिबनी and जदि नुवा अच्छा exploring goals youtube channel रे subscribe भी कर दो thank you for watching जय जगन्नाथ